Today's topic is मैनेज वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यू को आप कैसे मैनेज करेंगे। स्प्रेडशीट ऑफर्स द यूजर विथ वेरिएबल व्यूज फॉर द पर्पस ऑफ viewing the outcome of the sheet while printing. There are 5 types of views available in the spreadsheet: normal view, page layout view, page break preview, custom view, and full screen. These all are the workbook views where you can see how will look your document. आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा अलग अलग व्यूज में, लाइक नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, custom views, and full screen. You can select one of the above said views by clicking the appropriate option under workbook views in the view tab. आप इन सारे व्यूज को देख सकते हैं व्यू टैब में और अलग अलग व्यू में चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। Here given all views and their names. Normal view. The default view of the spreadsheet application is the normal. It's a collection of cells arranged in the work area. जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है हमारे वर्कशीट का, ये नॉर्मल व्यू होता है। इसमें कलेक्शंस होते हैं सेल्स का जो अरेंज्ड होता है। नेक्स्ट, पेज लेआउट. You can select the page layout view in order to quickly fine-tune a worksheet that contains many charts or huge amounts of data and achieve professional-looking results. In a page layout, you can quickly see how will look page. You can arrange a large amount of data and achieve professional looking. Next one is page break preview. This option is similar to the page layout option, except you can set the area that is to be set as a page after inserting page break. In a page break preview, you can see the page break. Next one is custom views. If you would like to view selected area of a document, you can use the custom views option. For examples, if you would like to point out certain row and column, you can add that to the custom view. If you want to arrange your document according to your requirement or need, then you have to use custom view. Here you can arrange or modify according to your need. Next one is full screen. Selecting this option make the workbook cover the entire screen. All tabs are hidden from view. To get back the tabs, click on File and Restore command. In a full screen view, all tabs are hidden. आपके सारे टैब्स कमांड्स क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे और आपके फुल स्क्रीन में आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। Additionally,
In a spreadsheet, you can open multiple windows that display the current spreadsheet and then arrange those windows in a variety of ways. You can also open and arrange multiple workbook windows. आप मल्टीपल वर्कबुक विंडो को अरेंज कर सकते हैं with the help of those options. Next one is to open a second instance of a workbook in a separate window. Then follow the steps. Click the new window button on the view tab in the window group. अगर आप चाहते हैं अपने विंडो का या वर्कबुक का न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना तो सिंपली न्यू विंडो बटन पे क्लिक कीजिए व्यू टैब में. नेक्स्ट वन इज टू अरेंज मल्टीपल प्रोग्राम विंडो. अगर आप मल्टीपल विंडोज को अरेंज करना चाहते हैं देन फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, click arrange all button in window group and arrange window dialog box appears. आपको क्लिक करना है arrange all बटन पे विंडो ग्रुप में तो क्या होगा arrange window dialog box आपके स्क्रीन पे appear होगा. Look like this here given in पेज नंबर 24. ये फिगर 24. Step 2, click either tiled, horizontal, vertical or cascade options. Step 3, to include only Windows display view of the current workbook. Select the window of active workbook checkbox. After that, click on OK button. Step 4. तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ही अरेंज विंडो डायलॉग बॉक्स आया तो ये सारे रेडियो बटन्स है टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कास्केड, किसी एक पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कीजिए तो सारा विंडो अरेंज हो जाएगा. नेक्स्ट हेयर गिवन आर सम एक्सरसाइज एंड असेसमेंट क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू सॉल्व. नेक्स्ट टॉपिक इज apply cell and range name. Apply cell and range name. You can assign names to cell in a worksheet and use it for quickly locating specific cells by entering the names. This could be useful when working with large spreadsheets. For example, if you have a lengthy list of gracious and prices, you can use names to quickly locate and find total pricing of fruits from the entire list. In this exercise, you will learn to work with cell and range names. As you are aware of that in Microsoft Excel, also called a spreadsheet, here all the cells have a unique name or unique address like A1, B1, C1, A2, B2, C2. All these are called the address or name of a cells. You can easily change the name of the cells. Here given examples. If you want to give the name of the range, then select the range. After that, click on name range options of द फार्मूला टैब. आपको फार्मूला टैब पे क्लिक करना है और डिफाइन नेम ऑप्शन पे क्लिक करना.
जैसे न्यू नेम पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे। लुक लाइक फिगर 26। Here you can define the name of a range of cells. After that, you can define the scope of the name like single worksheet or whole workbook. After that, click on OK button. It will create or define the name of range or cell, range of cells. If you want to calculate, then you can use the name of cells that you defined. Here given an example equal to sum and fruits. After that, press enter. With the help of this command, you can calculate the sum of range और टोटल ऑफ रेंज। इसे आप क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। Here also given a some exercise and assessments. You all have to try to solve. If any doubts, then you can ask. Thank you.